Okay students, now the next topic, determination of equilibrium output GDP or equilibrium income. So students, we have two approaches to study the determination of equilibrium output GDP or equilibrium income. First, aggregate supply is equal aggregate demand approach, and second, S is equal I approach. Say in what follows we discuss how equilibrium is determined using each of these approaches. तो हमें क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या डिस्कस करना है, इसके बारे में हम देखेंगे दोनों ही अप्रोचेस में. ओके, सो नाउ द फर्स्ट वन इज एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल एग्रीगेट डिमांड अप्रोच and equilibrium GDP or equilibrium income. Okay, so in this point, according to this approach, equilibrium GDP or equilibrium income is achieved when aggregate supply is equal aggregate demand. तो इस अप्रोच के आधार पे अनुसार हम देखेंगे इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम जो है कैसे अचीव करता है, इक्वल कैसे होता है, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल कैसे होगा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. हम सभी जानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, जो प्लान की जाती है प्रोड्यूसर्स के थ्रू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर के लिए. एंड एग्रीगेट डिमांड्स क्या हो जाता है, जो प्लान की जाती है या फिक्स की जाती है बायर्स के थ्रू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. दैट इज द पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड प्रोड्यूसर दे हैव प्लान aggregate supply. Okay, in the previous chapter, so only a brief description is repeated as required in the context of equilibrium GDP. तो यहाँ पर brief description दिया गया है aggregate supply का. So aggregate supply refers to planned output in the economy. aggregate supply जो होता है वो क्या होता है, planned output होता है इकोनॉमी का. as described in the previous chapter, it is indicated by a 45 degree line from the origin. मतलब origin से क्या रहेगा, 45 degree line पर रहेगा. The 45 degree line indicate that aggregate supply and GDP are identical to each other. दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे. So aggregate supply is not related to price. aggregate supply का relation price से नहीं होता है. As we are considering an economy where price remains constant. अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे, we are considering an economy where price remain constant, जब price constant रहेगा. It is an economy with excess capacity. It is an economy with excess capacity where aggregate supply respond proportionately to aggregate demand and price remain unaffected. तो यहाँ पर प्राइस का रिलेशन जो है एग्रीगेट सप्लाई से नहीं होता है. तो एग्रीगेट सप्लाई किस तरह से प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्ड करेगा एग्रीगेट डिमांड से, वो भी प्राइस जो है अफेक्ट नहीं होगा जिस पर. तो देखते हैं. ओके, सो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन. ओके, सो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन में आप देखेंगे वाई एक्सिस एग्रीगेट सप्लाई, एक्स एक्सिस लेवल ऑफ इनकम और जीडीपी. सो लाइन ऑफ 45 डिग्री लाइन एग्रीगेट सप्लाई कहें या उसको लेवल ऑफ इनकम कहें, क्योंकि प्राइस का रिलेशन इससे नहीं होता है. ओके स्टूडेंट, सो डेटा सेट व्हेन वाई और जीडीपी, जीरो लेवल ऑफ इनकम, जीरो लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, 30 ऑफ income and 30 of aggregate supply and 50 then 50. So it is the both are identify the equal. Okay, so aggregate supply and level of income to each other, identical to each other. The figure shows that Y or GDP and aggregate supply are identical to each other. Thus when Y is equal 30, aggregate supply is also 30. Likewise when y is equal 50, aggregate supply is also 50 and so on. तो जैसे जैसे वो इंक्रीज करेगा उसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज करता है. नाउ द नेक्स्ट एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड refers to desired expenditure or planned expenditure in the economy during an accounting year. It has two components. इसके कितने हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, desired consumption expenditure and desired investment expenditure. Okay, desired
also called the planned consumption expenditure and planned investment expenditure. Desired investment expenditure is assumed to be ऑटोनॉमस. वो क्या रहता है, वो ऑटोनॉमस रहता है, मतलब एक समान रहता है. जो प्लानिंग की जाती है इन्वेस्टमेंट, वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, पैरेलल रहेगा. ओके, सो दैट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. तो जो डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा उसका रिलेशन लेवल ऑफ इनकम से नहीं होगा, वो वन टाइम होता है और वो पैरेलल होता है. ओके, बट द डिज़ायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम. बट जो प्लान कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो किससे रहेगा, रिलेट करेगा, लेवल ऑफ इनकम से रहेगा. देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन सी एंड इनकम वाई. दोनों के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. दैट मीन्स कि व्हेन द इंक्रीजिंग level of income, so also increase the level of consumption. C rises as income rises. However, there is always some minimum level of C independent of Y. The C may be 30 when Y is equal 0. When level of income is 0, then consumption level is 30 or minimum level. This is just an assumption that C is equal 30 when Y is equal 0. Okay, so based on this description, I function, C function and combined C and I function are drawn as figure 2 and figure 3 and figure 4 respectively. The combined C and I function is called aggregate demand function. So we can say that C and I function is called aggregate demand function. Now you can see the I function. Okay, so already we have discussed the investment expenditure, desired investment expenditure, and no relationship between the level of income and investment desired investment expenditure. That is the reason the level of income and expenditure investment expenditure, it is the parallel or horizontal of x-axis. horizontal line है, or parallel of x-axis. So investment expenditure is parallel of x-axis. So all investment is treated as autonomous investment. It is not related to y. So that I is drawn as a horizontal straight line. Okay. So next C function. That means the consumption, y-axis consumption expenditure and x-axis level of income or GDP. When the level of income is 0, then consumption is 30 or minimum level. When increasing level of income and also increase level of consumption. Okay, so that is the desired or planned consumption expenditure, and that is the level of income. So student, when the 45-degree line level of income and C line is the consumption autonomous. Okay, autonomous consumption 30, and when the level of income 0, then autonomous consumption 30. When increase the level of income, then also increase the level of consumption. Okay, so OK is autonomous consumption. Now OK, this point is K, autonomous consumption expenditure. C rises when C rises as Y rises. जब C बढ़ेगा तो Y भी क्या होगा, बढ़ेगा. C function is a straight line implying that it is a linear function. Okay, C function is a straight line. C functions क्या है, straight line है. Okay, और इसी को क्या कहा गया है, linear functions कहा गया है. Now already we have discussed C line and I line. So this is the C function and I functions. C and I function combined, it is called aggregate demand function. Okay student, so aggregate demand function, y-axis expenditure C and I, okay, and x-axis level of income or GDP. Okay, now the I line or planned investment expenditure line is the parallel of x-axis or horizontal line, because no relationship between the level of income and investment. So that is the reason the level of income increases and investment is the parallel of x-axis. Okay, it is the autonomous investment.
but when the origin point 45-degree line is a level of income, okay, and when the zero level of income, then consumption is minimum level. consumption कितना है? minimum level. when increases, that is the linear line, okay. So now data set, when level of income 0, the consumption is minimum level 30, consumption is minimum 30, okay. And why? When level of income increases 20, 40, 60, 80, 100, 120 and 140, then level of consumption is also increases 30, 40, 50, 60, 70 and 70, 80, 90 and 100. And investment, it is autonomous. ये क्या है? Autonomous, because no relationship between level of income and investment. That is the investment line is a parallel of x-axis. So that is the reason the level of employment are equal, okay, all part. So that is the reason the 20 is the autonomous investment expenditure, okay. And 30 consumption level, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, okay, 90 and 100. And C plus I, that means 30 plus 20 50, 40 plus 20 60 and 50 plus 20 70, 60 plus 20 80, 70 plus 20 90, 80 plus 20 100, ओके. यहाँ पर देखिए लेवल ऑफ इनकम और जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितना है? 100 है. सो दैट इज द इक्वल. तो यहाँ पर जो 100 है वो क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, लेवल ऑफ इनकम एंड किसको? एग्रीगेट डिमांड को. बट जो कंजप्शन लाइन है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पर कर रहा है. लेकिन C प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड किस पर है? C प्लस आई. दैट इज द रीजन द कंजप्शन एंड लेवल ऑफ इनकम इंटरसेक्ट टू एग्रीगेट डिमांड लाइन एंड लेवल ऑफ इनकम इंटरसेक्ट टू पॉइंट, okay. That point is the equal. So autonomous C is equal 30, autonomous I is equal 20, autonomous expenditure is equal 30 plus 20 is equal 50. So when the level of income 0, then autonomous expenditure is 50, okay. Now C and I functions are combined to get aggregate demand function. Constant value of I is equal 20 added to different value of C to get C plus I. Example, I is equal 20, C is equal 30, so that C plus I is equal 50. This is the when Y is equal 0. Likewise, when Y is equal 100, when C is equal 80 and I is equal 20 and C plus I is equal 100. So that is the reason when Y is equal 100, then aggregate demand is also 100, okay. Now the next equilibrium, GDPR equilibrium income tabular presentation.